class. And what's your name? Your name? Mangal. What? It's your first class, right? And yours? So, like, were you present online? Were you present online? Classes देख रहे थे online की? आप? Did I give you any homework? दिया? Okay, this Saturday we have test. Yes. Why we don't have single Mahila Mitra? सब एक्सेप्ट एब्सेंटली हो गए. हाँ? नहीं, आज भी है ना? नहीं. Communalism सबको समझ में आ गया? Is there anything that you didn't understand? Obviously, we had so much of discussion. So today we are going to do regionalism. Okay, how do you define region? On what basis they are like different? Are they same? Different? What are they? Okay, are they homogeneous? Are they homogeneous? Okay, are they? Asking you, sir. Okay. What about you? Are region homogeneous? Okay, what is region? Like, how do you define it? Then if it's similar, don't you think it should be like homogeneous? Why did you say no? Okay. Anyone else? Okay, if I explain you in a very simple language, please come. If I explain you in a very simple language, then think of like a platter. ठीक है? उसमें दाल है, चावल है, ठीक है? अलग-अलग सब्जियां हैं. So when you are actually tasting that dal, with every spoon you will taste the similar thing, है ना? दाल का दाल ही टेस्ट आएगा ना. एक बाइट लो या फिर दूसरी लो या तीसरी लो, right? So that's what similarity. But dal is different than rice. So difference is there, right? And this is what differentiate between regions. और किस-किस basis पे differentiation होते हैं? इकोनॉमिक पे, हिस्टोरिकल पर, कल्चरल पर, राइट? ठीक है. So write down. Did you get PDF family wali?
The word region does not have. तो छोटा सा टॉपिक है, we'll try to finish in 2 classes. Sure, take your time. Leave space for that. The word region does not have one fixed definition. Rashi, take your time. I'll dictate again. Does not have one fixed definition. The word region does not have one fixed definition. One fixed definition because its meaning. So it will be 1 hour test. Yes, Saturday it will be 1 hour test of 2 questions. ठीक है, no word limit. Word limit. तो 50 शब्दों में खत्म करना है तो 50 में कर देना, 500 में अच्छा लगे तो 500 लिख देना, ठीक है. One fixed definition because its meaning changes with the situation. So basically region are like they are going to feel different from outside, but जो उनका अंदर से अगर हम देखते हैं तो there are like similarities, ठीक है. अगर आप पंजाब की तरफ जाओगे उनका कल्चर डिफरेंट है देन द साउथ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, ठीक है. इन जनरल अ रीजन मीन्स एन एरिया that looks and feels different from the areas around it. That looks and feels different from the areas around it. Also write homogeneous, and in front of it write down the people living there. The people living there share many common things. Share many common things. Write down example खुद से. कुछ भी नहीं समझाया मैंने. समझा. What example did you write? Write state's name also and the differentiation. What did you write? Loud. States के नाम भी लिखो and उसके differences लिखो. Next line. Identity of a region. A region is not only about land and geography. A region is not only about land and geography, but also about the people and their identity. So in one single region, there are like similarities on basis of culture, language, and customs. Okay? That's why there is sense of unity in there. Understood? Next, write down. लिख देती. Example: the people of Punjab feel proud of their
पंजाबी कल्चर, फूड, म्यूजिक एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री। सब फील करते हैं, बट एग्जाम्पल पंजाब का लिख दो, आप किसी और का लिख दो। हाँ, आप राजस्थान का लिख दो, दिल्ली, दिल्ली तो माइग्रेटेड है। साउथ का लिख दो, किसी का भी लिख दो, आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट सर। ओके, विच मेक्स देम, कम्युनलिज्म लास्ट हमने पढ़ा है, एंड हिस्ट्री which makes them different from the people. Why did you say so harshly about Punjab? Is it about that Khalistan stuff? About? अच्छा, अब साउथ और नॉर्थ का खत्म हो गया है तो because of that. पॉलिटिकल व्यूज थोड़ा साइड में ही रखेंगे। इन जनरल तो कुछ नहीं है इसमें, यू कैन नॉट राइट दैट इन पेपर। What was that? Okay, of course. Which makes them different, which makes them different from the people of Kerala or Gujarat. From the people of Kerala or Gujarat. So, like, did you feel dominated? Because of the majority. Yeah. So, like, when it comes to their ideology, like, did you find something? सुन लो कुछ, कॉम्युनलिज्म के बारे में बात करिए, लास्ट बात बता रहा है वो कुछ। He is explaining that it's existing अभी भी, लिखने को मिल जाएगा कुछ। So जब भी हम सुधार की बात करते हैं, we always write education. So can we say that education has nothing to do with it? It's like, I won't say nothing, but still there are other factors who are more leading. Yes. Even educated people are doing, especially अगर college में ये सब हो रहा है तो imagine how vast it is. Okay, write down sources of regional unity. Did you write example of Punjab or any other state, sir? Regional unity. अरे homogeneous, अच्छा ठीक है, from where are you? लखनऊ, तो लखनऊ और साउथ में कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ लखनऊ की है और वहां के सारे पीपल वही चीज फॉलो करते होंगे। इज देयर समथिंग? क्या? What else? Like, is there any custom and culture which is of Lucknow only? हाँ, तो फिर वो चीज डिफरेंशिएट करती है साउथ के वहां से, तो दैट मेक्स लखनऊ अ रीजन, राइट? वहां के कल्चर कस्टम्स अलग है, वहां का कल्चर अलग है, ठीक है, साउथ से काफी अलग है, ठीक है, एंड साउथ इज मोर नोन फॉर ग्रीनरी, ठीक है, तो वो होमोजेनियस हो गया साउथ का, राइट? ग्रीनरी थोड़ा
ओके अब वो साउथ में मिलेगा नहीं ना, तो वो पूरे लखनऊ में स्प्रेड है, तो वो वहां के लिए होमोजेनियस हुआ, वहां के सब लोग फॉलो करते हैं, एंड देन एवरीवन एग्रीज टू इट, कल्चर है वहां का, कस्टम है वहां का, राइट? वो चीज साउथ में नहीं है, तो वो चीज होमोजेनियस है। बट व्हेन यू लुक इट अप फ्रॉम आउटसाइड, वो अलग है, डिफरेंट है लखनऊ से और बाकी स्टेट से। आगे समझ में? किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करोगे बट उससे? हाँ, तो बस फिर वही डिफरेंसेस है। तुम्हें रीजन का मतलब समझ में आया? प्रॉपर, हाँ, पक्का समझ में आया कि अगर हम अंदर बात करते हैं तो मतलब हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लेकिन हम जब बाहर देखते हैं तो हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। यस, ओके, राइट डाउन सोर्सेज ऑफ रीजनल यूनिटी। A sense of regional unity comes from many different sources. Everyone submitted their assignment, test, or whatever you want to say, essay, cohabitation और वो वाला। किस किसने नहीं दिया है कोहैबिटेशन वाला? Why? बहुत दिन हो गए सर उसको। बताया था ना इसे, वो झूठ नहीं बोलता है। कब मिलेगा मुझे? उनको भी बताना है, दोनों को। और किसने नहीं दिया है? सैटरडे को टेस्ट होगा। ओके, दिया है टेस्ट कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन रखो उसको, आके लेती हूँ बाद में। आपने दिया, गुड। आपने, और आप क्यों? हाँ, क्यों नहीं लिखोगे कंक्लूजन? लिखना है कंक्लूजन, मैंने दिखाया था ना फॉर्मेट कैसे कैसे लिखना है। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ रीजनल यूनिटी from many different sources, uh, sometimes it comes from geography, sometimes it comes from geography, such as the Himalaya region, which binds its people. Himalaya region, which binds its people through mountains and valleys. Next pointer, language. Tamil Nadu, where Tamil binds. Tamil Nadu, where Tamil binds people together. आई एम ग्लैड मेरी मतलब मेरे अलावा तुम लोगों की आवाज नहीं जाती है यूट्यूब पे। नहीं, हाँ, इसे, हाँ पता है मुझे नहीं जाती है, इसलिए बोलने देती हूँ मैं। ओके, लैंग्वेज इन तमिलनाडु, लिख लिया?
Okay, religion or customs? In Ladakh, where Buddhism plays a big role. History, big role. But next line, history. It can unite people, such as the Marathas of Maharashtra. You can write any other example you want. History can unite people such as the Marathas of Maharashtra, who still feel connected, to the legacy of Shivaji Maharaj. When you guys write, do you read it? मतलब मेडिटेट कर रही हूँ, लिख रहे हो तो दिमाग में चलते हैं वो या बस क्या है? क्यों? हाँ तो फिर वही तो है, वही तो मैंने बताया कि इट्स फीलिंग लाइक यूनाइटेड अंदर से, बट व्हेन वी लुक फ्रॉम आउटसाइड इट फील्स डिफरेंट. वो तो हर कोई फिर अपना कल्चर फोर्स करने की कोशिश करता है, वरना कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ नहीं रहे होते. एंड सेम गोज विद साउथ इंडियंस कि अगर वहां पे जा रहे हो दे आर फोर्सिंग यू टू स्पीक हिंदी. There are many incidents, many, and lately it's happening a lot. गिन लेते हैं, 12 यहाँ पे है, 11 वहाँ पे है, तो 12 यहाँ पे ज्यादा है. हाँ बट रिसेंटली महाराष्ट्र वाले इट्स हैपनिंग अ लॉट. So like we have lots and lots of current affairs to write. Good. चलो. क्या करते हैं? ग्रेजुएशन डन. किसमें? इन मतलब प्रोग्राम ओनर्स. अच्छा. कहाँ से? Okay, next write down region and regionalism. The concept of region is directly linked to regionalism. The concept of region is directly linked to regionalism. So when इधर मतलब तुम लोग देखते नहीं होगे मैम समझा रही है कि डिक्टेट करा रही है. तो बेसिकली व्हेन वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू आवर कल्चर, ठीक है, जब हम अपने कस्टम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर नेशन, ठीक है, तो वहां पर रीजनलिज्म आता है. सो राइट इन योर ओन वर्ड्स. समझ में आया ना? So when we are thinking about our own community, about ourselves, about our customs and beliefs, ठीक है, instead of thinking about nation, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड हो गए हैं. एज अ होल कम्युनिटी देखने की बजाय हम लोग अपनी अपनी कम्युनिटी छोटी छोटी कम्युनिटी में डिवाइड हो चुके हैं. दैट्स रीजनलिज्म. तो रीजन छोटी सी जगह, रीजनलिज्म इट्स लाइक वी आर डूइंग डिविजन्स. यस. बहुत कम पढ़ते हो तुम लोग. सो लाइक यू नेवर स्टडीड. अच्छा एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ रहा है? स्कूल में तो यू गाइज रेड ना सोशल साइंस. 10 तक पढ़ी है ना? 8 तक भी काफी है. लिखो जल्दी.
So this is a 1 hour class. Can I have this phone, please? Online students, I hope that you are writing. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 2 लाइन लिखने के लिए. 3 बार तो मैंने समझा दिया 1 मिनट में. I forgot your name. Aniket. Jyoti ma'am said that you are a very nice kid. Yeah. लिख लिया. The disparity in community based on the basis of regions that cause anxiety. Write more. 4 लिखो. क्या लिखा है? हाँ, एग्जाम्पल्स लिखो. राइट मोर. जो मैंने डिक्टेट किया था एग्जैक्टली प्रिसाइजली वही लिखा है आपने. आपने लिखा. लिखो. ओके सर, आप आगे आ जाओ प्लीज. राइट अनदर वन. कहानी थोड़ी ना लिखनी है. एग्जाम्पल. The impose of Hindi on the whole country because of the political dominance. दोबारा. The imposition of Hindi on the whole country because of the dominance of political power in North. हाँ, लिख सकते हो. इतना कम पढ़ते हो तुम कि तुम 2 लाइन नहीं लिख पा रहे हो. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद योर एकेडमिक बैकग्राउंड. मैम मैं तो इंजीनियर से हूँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ. क्या कर रहे हो? कॉमर्स. ओके, राइट डाउन पॉजिटिव साइड ऑफ रीजनलिज्म. Write down positive side of regionalism. Are there any positive side of this? Like these differences seen as something good. Cultural preserve हो रहा है. और if we are like dividing in sections, ठीक है, we are thinking about our economic development, preserving our culture like you said, ठीक है, और आगे अपना कल्चर स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आगे की जनरेशन को. हाँ, सो अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड्स हैं, बट लार्जर सेक्शन में हाउ विल यू सी इट? ओके. ओके, राइट डाउन पॉजिटिव में पॉइंटर्स में लिखेंगे जल्दी जल्दी. प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, लैंग्वेज, culture and traditions. Point number 1, protect their language, culture and tradition from being lost. Protect their language, culture and traditions from being lost.
Highlighting the next pointer, highlighting the economic and political needs, highlighting the economic and political needs. इमेजिन कोई अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, तो जो वहां पे इश्यूज है, जो छोटे छोटे रीजन्स है, वहां के इश्यूज रेज हो पाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोलिपिसिज्म इज नेसेसरी. Solipsism is being self-centered. You are thinking about yourself. I. It's considered positive. हाँ, exactly. Yes. Next, write down example. Jharkhand movement. हाँ, बिल्कुल. Write and dictate. For many years, the tribal people of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, the tribal people of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, and West Bengal struggled together to protect their culture, to protect their culture and and fight against poverty and exploitation. Fight against poverty and exploitation. Finally, the Indian government recognized their demand, and created Jharkhand as separate state on 15 November 2000. As a separate state on 15 November 2000. नेगेटिव साइड क्या हो? नेगेटिव साइड regionalism में, if you are thinking about yourself, if you are not taking as a whole community, as like not thinking as a nation, तो क्या नेगेटिव साइड होगी? Okay. Can they ask for divisions also? That we want separate nation? Example. Punjab, Khalistan. ठीक है. Write this in 4 liners with example. और जल्दी 2 मिनट है तुम्हारे पास. 2 भी नहीं, 1 मिनट. Leave space for that. बाद में डिक्टेट करूंगी. 1 मिनट है. So I hope that you understood why regionalism is important. उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है? And we have lots and lots of examples इसमें, especially आजकल के current affairs. So is it a good thing or bad thing? कितने सारे current affairs लिखने को हैं हमारे पास. But good thing for you. Done? क्या लिखा?
Loud. तो एग्जाम्पल हो गया ना, like explain properly without giving examples. That negative sides of regionalism is this, and then give example. सोचो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री समवेयर, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि केरला में लड़ाई हो गई या फिर पंजाब में लड़ाई हो गई, दे आर आस्किंग फॉर अनदर नेशन, तो मतलब शेमफुल इट इज, ठीक है। हम इतना प्राउडली बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतना लैंग्वेज रिकग्निशन है, बट स्टिल वी आर फाइटिंग टुगेदर. डन, विल गो फर्स्ट. इतना नहीं लिखना है, 4 लाइन बोली है मैंने. राशि रीड. Read again, slow and loud. It's an example. तो नेगेटिव में मैंने एग्जांपल लास्ट में बोला. फर्स्ट एक्सप्लेन कि रीजनलिज्म में पॉजिटिव क्या है और क्यों है. कोई और प्लीज. ओके, अनदर क्वेश्चन टू यू कि अगर किसी को दूसरा नेशन बना दिया जाता है, सपोज खालिस्तान, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे उन्हें? हाँ, खालिस्तान, बॉर्डर्स, ओके, आर्मी नहीं, ये तो फैक्टर्स होंगे. क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने मिलेंगे? लाइक व्हेन वी क्रिएटेड पाकिस्तान, ठीक है, सेपरेट नेशन, तो उसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, ठीक है. ओके, और कुछ इकोनॉमिक में क्या होगा? लाइक फंडिंग विल गो फ्रॉम हेयर, बट उसके बाद व्हेन दैट रिसोर्सेज विल बी फिनिश्ड, फिर उसके बाद क्या? अच्छा, नहीं, डिफरेंशिएट नहीं होगा वहां पे. वहां पे कास्ट नहीं आएगा सिस्टम. अभी एग्जिस्ट करता है. सेम गो, लाइक सेम टू सेम पाकिस्तान के लिए भी था ना. दे वांटेड टू डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, तो मुस्लिम वहां पे रह रहे थे. डोंट यू थिंक वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए था, बट होता है. एग्जैक्टली. Okay, so there is one question and I won't explain to you what you have to write. Like surprise me, ठीक है? Explain how India's, write down. Federal system. Explain how India's federal system helps in maintaining both
Regional diversity and national unity. Regional diversity and national unity. Give one example to support your answer. Do not ask me a single word from this. बहुत simple सा question है. Give one example to support your answer. कब तक दोगे? कल? You have to write 2. नहीं कल चाहिए मुझे. दिया है कोहैबिटेशन वाला? You didn't write, did you? कहाँ है? Come back from school. कॉलेज भी नहीं है ये तो. ना ही मैं सैटरडे को पीटीएम्स लेती हूँ. You're behaving like. आई कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मुझे अब आप लोगों ने. बिल्कुल स्कूल बना दिया इस क्लासरूम को. लिखा था पर घर रह गया है. कल पेरेंट्स को लेके आना. Okay, write down causes of regionalism. तो causes क्या होंगे? When people think कि इस रीजन में गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है. फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन. क्या मतलब था इसका डेप्रिवेशन का? हाँ, खुद से लिखो. बहुत इजी सा है. दे दो, कोई बात नहीं. इतना लिखा है, मेहरबानी की है. अब कंक्लूजन के लिए मुझे 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा. Causes of regionalism. Feeling of deprivation. How many hours you study? इसके अलावा कितने घंटे पढ़ते हो अपार्ट फ्रॉम दिस? फुल स्टॉप ही लगा दी. कितने घंटे पढ़ते हो? आप बता दो. जब मन अच्छा होता है कितने घंटे पढ़ते हो? 7-8 घंटे अपार्ट फ्रॉम दिस. वेरी गुड. कितने घंटे? पढ़ते ही नहीं हो. 1 फुल स्टॉप. राशि, हाउ मेनी आवर्स? अपार्ट फ्रॉम कोचिंग ना. छुट्टी रहती है तो 3. डू यू थिंक 3-4 घंटे इनफ है? तुम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए 3-4 घंटे काफी है? अगर तुम दिन में 12-13 से घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो. ऐसा ही होता है. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आंसर राइटिंग की, ठीक है, और आप नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ से कितना भी उठाकर ले जाओ, वहां पे उस टाइम में कितना लिख पाओगे दैट मैटर्स. प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है सर. यही एटीट्यूड दैट दिस इज अ स्टार्टिंग इज अ वर्स्ट थिंग. For how many days you are preparing for this? 60 दिन. 60 दिन. 50 दिन चलो मान लेते हैं. 50 दिन में से कुछ भी चेंजेस आए क्या?
If you are feeling for this and you're justifying it, then there is like no solution. Like you are justifying it. 4 घंटे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, घर से आने के बाद 2-2 घंटे के ट्यूशंस लगाने जाते हैं वो लोग। स्कूल के आने के बाद आज के बच्चे वो ट्यूशंस में जाते हैं 4-4 घंटे पढ़ने के लिए। अच्छा, यू आर सेइंग कि मैं स्कूल में नहीं जाता था कभी और ओके, राइट डाउन फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म में फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन। Causes of regionalism may write down feeling of deprivation. People in some regions feel people in some regions feel that government is not paying enough attention. People in some regions feel that the government is not paying enough attention to their needs. Government is not paying enough attention to their needs. They believe that resources enough attention to their needs. They believe that resources, jobs, or development programs are going to more to other regions while their area is being neglected. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 रीजन्स, उसमें से एक का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, बट दूसरे रीजन बिल्कुल बैकवर्ड है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जो दूसरा रीजन है उसे फील होगा कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, राइट डाउन अनदर थिंग, regionalism in India. Also, you have class till 9:15, not 9:05. मैंने चेंज नहीं कराया, it was 9:15 only, it was by mistake they wrote like 9:05. हाँ, शुरू से मिस्टेक हो रहा है, because I was told कि 9:15 तक है, you guys manipulated me. मुझे इतना गिल्टी फील कराया तुम लोगों ने। देखा था मैंने 9:05। सही बात है, फिर 4 घंटे में तो पढ़ना है ना घर जाके। Where do you live? Regionalism in India, ज्यादा दूर नहीं है, डायरेक्ट मेट्रो है, just 40 minutes. India is naturally a land of great diversity. We have hundreds of languages, different religion, unique cultures, and many tribal communities. Different religions, unique cultures, and many tribal communities. Shalini, Sukriti, Bhavya, Anjali, online students, are you writing? Yes, ma'am. Okay. Next, these differences are concentrated. Differences are concentrated
in particular regions. एग्जाम्पल खुद लिखो. Mention 2 to 3 states. States with differences, sir. Who lives alone? बाकी सब परिवार. I'm seeing किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको नहीं है. 4 घंटे वाला मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, 4 घंटे क्यों होता है. अभी तो मेंशन होगा और भी काम होता है. So like they threw you out at 18. They threw you out of your house like 18. At 18. Then अच्छा, got it. What examples did you write? 4 स्टेट के नाम लिखने हैं with differences and you are taking so much of time. You have written. क्या लिखा है? With महाराष्ट्र में क्या? Next, write down. Because of this diversity, regionalism is bound to be strong in India. Because of this diversity, regionalism is bound to be strong in India. However, India's federal system of government has helped to control this problem. Federal system of government has helped to control this problem. कैसे control किया? Not you, someone else. कैसे किसे कंट्रोल किया होगा फेडरल सिस्टम में? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? फेडरल सिस्टम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किस बेसिस पे है? ओके, कैसे एक्सप्लेन? थोड़ा ऊपर आ जाता है. स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है. और कौन बताएगा इनके अलावा? फेडरल सिस्टम का लाइक कैसे हेल्प करता है रीजनलिज्म में? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेसिस पे है? गुड. हाँ. How it helps in regionalism? Exactly. जो states होते हैं, they make their own decisions, ठीक है, तो they can focus on the culture and communities of the people more precisely than center looking at those things, ठीक है. इतना ज्यादा division में नहीं देखा जा सकता है.
लिखो खुद से। लिख लिया? खुद एक्सप्लेन करके लिखने में प्रॉब्लम होती है? तो कितने बिजनेस चल रहे हैं? एक ही है? कोई नहीं, पेपर तो होता रहेगा। गलती से उठ गया, चुंबक लगे ना हाथ पे, चल ही जाती है ना? सबमिट कर रहा हूँ। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठते हो? कम दिखूंगी मैं या मुझे तुम कम दिखोगे? यहाँ भी है। बोला तुम लोगों ने एडमिन को? बोला था? लास्ट का बोल। तो बोल दो कि हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तुम हमारे साथ कर रहे हो। कोई नहीं, एज दे सेड सर्दी आने वाली है। क्या लिखा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट योर माइक एंड क्या लिखा है? शालिनी, सुकृति, भव्या, अंजलि। अब तो मैं ऐसे फास्ट डिक्टेट नहीं करा रही हूँ ना? हाँ, क्या लिखा है उसमें? राशिद सुनो ध्यान से, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन करो ना कि फेडरल सिस्टम ऐसे हेल्प करता है कि सेंटर में और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज दोज कम्युनिटीज एंड रीजन्स जो लेफ्ट आउट हो जाता है सेंट्रल से। तो जो स्टेट की पावर है वो हेल्प करती है टू रिकॉग्नाइज दोज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट। सिंपल। हाँ, और स्टेट में देयर इज लाइक फर्दर डिविजन टू इट, फिर उसके बाद तुम वो भी डाल सकते हो एग्जांपल्स में। लाइक हाउ टफ इज इट राशि? डिक्टेट, पढ़ाओ, सुनाओ। बताओगे तो बताऊंगी ना मैं सही है नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट योरसेल्फ। क्या क्या लिखा है आपने? नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो ये दूसरा है कि फेडरल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस बेसिस पर है। क्वेश्चन दूसरा है। हाँ जी। हम्म। हाँ, उसको एक्सप्लेन कर दो और लिख दो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है रीजनलिज्म को, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हटाने में, समझने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, उनकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने में। न्यू नेम अनिकेत। लिख लिया? और लिखा जा सकता है इसमें? लिख लिया? सुनाओ लाउड। स्लो।
situation like riots happen. All sorts of different community people working in government job business, government things implementing problems and preventing it in such kind of situation. So judicial legislation and executive, all three wings of the federal system of India is divided further between center and state to help the situation. Next, write down. Regionalism is conditioned by economic, social, conditioned by economic, social, political, and cultural disparities. Right? Economic, lack of industries, jobs, infrastructure. Social, infrastructure. Social, discrimination against caste or tribe. Discrimination against caste or tribe. Political, less representation in government. Cultural, language or traditions not respected. Write down example. People in Telangana felt for years. People in Telangana felt for years that Andhra Pradesh, सर जो आप 4 घंटे पढ़ते हैं ना उसमें से 1 घंटा राइटिंग के लिए निकालो. Felt for years that आंध्र प्रदेश और सबके लिए है ये. And writing and presentation is very important. That Andhra Pradesh was getting more economic. That Andhra Pradesh was getting more economic and political benefits. And political benefits. This sense of disparity eventually led to the creation of Telangana as a separate state in 2014. Led to the creation of Telangana, eventually led to the creation of Telangana as a separate state in 2014. ओके और ऑल्सो ये साइकिक फिनोमिना भी बोला जाता है. क्यों? रीजनलिज्म, मतलब on basis of how people are like understanding it psychologically. क्या हो सकता है? Okay. Like if government is trying to help certain community, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि जो ये डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे हमारा कल्चर डिमिनिश हो रहा है. ठीक है, तो वो कम्युनिटी हेल्प करवाने से मना भी कर देती है गवर्नमेंट से. ऐसी कोई कम्युनिटी है? ट्राइबल्स.
तो साइकिक फिनोमिना इज व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल, बट उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक ज्यादा जनरेट हुई, ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. राइट डाउन. Sometimes regionalism is not only about real economic or political issues, but also about feelings and emotions. Political issues, but also political issues, but also about feelings and emotions. It becomes a psychic phenomena. Psychic. PSYCHIC. Yes. Meaning it is about how people, meaning it is about how people think and imagine their situation. Think and imagine their situation. Their situation. People may feel neglected or insulted. People may feel neglected or insulted even if even if the government is trying to help them. Right example. Insulted even if the government is trying to help them. Hmm. If emotion is this and this is mentioned in particular article, then you can mention it. But if there is no factual evidence, हाँ अगर वो ना, हाँ you can edit. ठीक है सर, हो गया सर ब्रेक.